This is the Gurudwara Bangla Sahib temple in New Delhi, India. Open 24 hours a day, 365 days a year, the temple's kitchen, or Langar, feeds 35,000 to 40,000 people every day, for free. And on religious holidays, that number can swell to well over 100,000 people. At the heart of this entire operation is kitchen manager Habej Singh, who makes sure there is always enough to eat. कभी भी कोई आए, कोई रात के 2 बजे आए, ऐसा दिन कोई नहीं रहा कि कोई बंगला साहब से भूखा गया हो. To keep up with demand, the kitchen uses specialized machines that can do everything from chopping vegetables and stirring stews to steaming the perfect dal. We visited the temple during a special holiday called Gurpurab to see how it makes a festive meal in such big batches. और कंप्लीट ऑटोमेटिक है, सब कुछ इसमें पेड़े आटा सब ओनली आटा गूंदना पड़ता है हमारे को, गूंद के इसके अंदर डालेंगे, कटिंग पेड़ा सब इसी ने करना है. उसके बाद ये देखो, ये रोटी कंप्लीट हो गए, अप डाउन 3 राउंड में बाहर है. While these machines make a majority of the bread the Langar uses, there is another area of the kitchen dedicated to making these breads by hand. This is done so people can practice sewa, or self-love service, a tenet of Sikhism. जो संगत आती है, जिनकी श्रद्धा होती है कि हमने भी गुरुद्वारा बंगला साहब में सेवा करनी है, तो वो यहाँ पे आके मैनुअल सेवा कर सकता है. 24 घंटे चलती है, जब भी किसी की श्रद्धा हो कर सकते हैं. The Langar officially opens its doors at 5 a.m. to serve food. तो आप देखोगे गुरुपुरब का दिन है, आज जा रहा है, तो लाखों में लोग आएंगे. Then the servers come around spoonning large portions of food into metal plates. And while the amount of food one can eat is unlimited, there is a rule that not a single bite of food can be wasted, so plates must be cleaned before finishing the meal. लंगर